Good morning, children. Today, in lesson 7, we are going to cover a part of a story from Panchatantra, a clever crab, or you can say the crane and the crab. Before starting the story, I just want to know one thing. Have you ever been greedy and eaten a lot of chocolates? Do you know greediness is very harmful for us? Greediness means लालच. किसी भी चीज की जो लालच होती है वो बहुत बुरी होती है. So my children, let's start this beautiful story. Once upon a time, there lived a stork near a big pond. A stork would catch fish from the pond for food. As time went by, the stork grew old and old, no longer catch fish. He grew very thin and weak. One day, he got an idea and started crying by the pond. क्या मतलब है? वो pond के पास बैठ के रोने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ. फिश ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? स्ट्रोक कहता है, आई हैव कम टू से गुड बाय माई फ्रेंड्स, आई एम मूविंग एल्सवेयर. मैं कहीं और जा रहा हूँ. फिश पूछती है, वाई, व्हाट इज द मैटर? फिश ने पूछा, क्या हो गया? स्ट्रोक, माई फ्रेंड हैव जस्ट टोल्ड मी दैट दिस ईयर there will be no rain and this pond will soon dry. Fish together. What will happen to us then? We will die without water. हमें क्या होगा? क्या हम बिना पानी के मर जाएंगे? हमें पानी नहीं मिलेगा. And they start talking to each other to take out the solution. कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो है बच जाएं. और धीरे धीरे वहाँ स्ट्रोक क्या सोचता है? स्ट्रोक के पास वो जाने का प्लान करते हैं. दैट इज वॉट हैज अपसेट मी. यू आर माई फ्रेंड्स एंड आई एम सो सॉरी दैट आई माइट लॉस यू, बट आई नीड टू फ्लाई टू द अदर पॉन्ड अक्रॉस द हिल्स. फिशेस कहती है, गो इफ यू मस्ट आवर फ्रेंड, बट डू थिंक वन ऑफ अ वे टू सेव अस. स्ट्रोक कहता है, आई हैव एन आइडिया, बट विल यू टेक अ चांस? फिश, डू यू टेल अस योर आइडिया? क्या आप मुझे अपना आइडिया बताओगे? स्ट्रोक कहता है, विल यू नीड टू ट्रस्ट मी? फिश, वी डू, टेल अस योर प्लान. Stroke, I could carry each one of you by one across the hill to the other pond. The fish were a little worried. They knew that the stroke could eat them, but they wanted to save their lives. Therefore, they agreed. They were also witty crab who lived in the pond, but he did not trust the stroke. Fishes went to the crab. Then crab said, listen, fish, the stroke may not be telling the truth. Let us stay here and see whether the pond actually starts drying up or not. Other side, crane was very happy that he got the food. Fishes, we do not wish to die. The stroke is trying to help us. If you do not wish to come, you can stay here. This is a talking among the fishes. The next day onwards, the stroke began to carry the fish across the mountain. Soon, the pond was empty of all the fishes. Slowly, वो एक fish को ले जाके pond अक्रॉस द माउंटेन रखने लगा और पूरा तालाब खाली हो गया. अब उसने क्रैब से बोला, योर फ्रेंड्स आर अवेटिंग ऑन द अदर साइड एंड टुडे आई टू शैल लीव दिस प्लेस. डू लेट मी टेक यू अक्रॉस टू द अदर पॉन्ड. But crab did not trust the stroke, but seeing no other way out, he agreed, okay, but do be careful, said the crab. While they were flying, the crab spotted fish bones scattered all over the hills. Soon
he realized that the greedy stork had killed all his friends, and he was very, very, very angry with the crane. He said to crane, तुमने मेरे सारे फ्रेंड्स मार डाले, तुमने बहुत गलत काम किया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं. And crab start making save himself. He quickly dig his pincers into the stork neck and did not let go till the stork started bleeding. He tightened up his very badly. उसने उसको क्या किया, कस के पकड़ के उसकी गर्दन मोड़ दी, और तब तक मोड़ा रहा जब तक वो ब्लीड नहीं करने लगा. इन शॉर्ट, मर नहीं गया. That is all about the story. Then crab, so this is how you repay the trust my friend placed in you. Now you too shall suffer. The cruel stork died, and the witty crab lived to tell his tale to the others. वो स्ट्रोक मर गया और फिर से क्रैब अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगा. So children, this is all about the story. It's a story from the Panchatantra. So this is all about the story. The moral of the story is never be greedy and don't fraud others just to buy or want something. आप किसी को भी hurt नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होता है. This is from the Panchatantra. I told you, just go through with the story very thoroughly from your book, and then we will meet in the next day. And do subscribe the channel. Like if you like the story and able to understand the story, please like and subscribe. Thank you so much. Do good, take care of your health. Bye.